हाँ संदीप मटेरियल दे दीजिए। हाँ ठीक अच्छे ओके ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा सीसैट का फिर और एक सेशन होगा, राइट। और ये सेशन में हम जो लास्ट पैसेज किए थे वो पैसेज 6 किए थे, आज पैसेज 7 से हम शुरू करेंगे। Many nations now place their faith in capitalism and governments choose it as the strategy to create wealth for their people, right? So capitalism जो form of government जहाँ पर free market economy होता है, and government choose it as the strategy to create wealth for people, because through capitalism आप wealth create कर सकते हो for people. The spectacular economic growth seen in Brazil, China and India after the liberalization of their economies is proof of its enormous potential and success. Capitalism का जो potential है, जो success है, free market economy, competitiveness, right? Many private players जो कि market में compete कर रहे हैं, वो एक बहुत successful model के हिसाब से काम कर रहा है। कहाँ पर? न ब्राज़ील, China and India, right? However, the global banking crisis and the economic recession have left many bewildered. Bewildered means puzzled. Confused. The debates tend to focus on free market operations and forces, their efficiency and their ability for self-correction. फ्री मार्केट जब होगा तो मार्केट में जो गलतियां होगी वो अपने से करेक्शन होते रहेगा। इश्यूज ऑफ जस्टिस, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी are rarely elaborated to highlight the failure of the global banking system. अभी ये जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में जो फेलियर होता है, ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस जो हुआ था, राइट, इन इकोनॉमिक रिसेशन 2008 में, राइट, उसमें जस्टिस, इंटेग्रिटी यानी सही ढंग से बैंक्स ऑपरेट किए या नहीं, या वो आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो एक एनिमल स्पिरिट होता है जो कि एक दूसरे के साथ compete करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो उसमें जस्टिस, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी शायद कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, राइट। और उसको इलेबोरेट नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम जब एक क्रिटिक कर रहे हैं कैपिटलिज्म का, राइट, तो उसमें ये चीज़ हाईलाइट होना बहुत है। अपोलॉजिस्ट्स ऑफ द सिस्टम कंटिन्यू टू जस्टिफाई द सक्सेस ऑफ कैपिटलिज्म and argue that the recent crisis was a blip. Blip means, blip is one of
unusual event. वो एक छोटा सा गलती था जो कि वन ऑफ हुआ है, राइट, वन ऑफ अनयूजुअल इवेंट. सो द फर्स्ट पैराग्राफ ये पैसेज 7 में क्या बोल रहा है कि कैपिटलिज्म ने एक शुरू हुआ है, कैपिटलिज्म का जो इफेक्ट हुआ है ये सब कंट्रीज में, उसको लेके ये शुरू हुआ है. एंड दीज कंट्रीज हैव सीन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, एंड उसका पोटेंशियल ऑफ सक्सेस. बट उसमें फिर क्रिटिक आ रहा है, एक क्रिटिसिज्म आ रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि कैपिटलिज्म का जो फ्री मार्केट ऑपरेशंस है उसमें जस्टिस, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज हुआ है और वो चीज़ के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है. मगर जो अपॉलॉजिस्ट हैं, यानी पीपल हु स्पीक इन सपोर्ट ऑफ कैपिटलिज्म, अपॉलॉजिस्ट इज someone who justifies a mistake. So वो लोग बोल रहे हैं कि ये मतलब अनयूजुअली एक वन ऑफ इवेंट हुआ है, तो इसको लेके उतना दिमाग तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं. Their arguments betray an ideological bias with the assumption, वो एक betray करता है, right, that an unregulated market is fair and competent. जिस मार्केट में कोई रेगुलेशन नहीं है, जिसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, वो फेयर एंड कॉम्पिटेंट है. एंड दैट द एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट ग्रीड विल बी इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. कैपिटलिज्म मार्केट में हर कंपनी का तो एक कमाने का एक जोश रहता है ना, तो नेचुरली उसमें एक ग्रीड फैक्टर यानी लोभ, लालच, राइट. ग्रीड बेसिकली इज एवरेज. Right, it's average. Okay, will be in the larger public interest. So unregulated market है, वहाँ पर competition fair and competent होगा, right. ये argument जो है वो betray करता है एक ideological bias, क्योंकि वो assume करते हैं ये चीज़ होगा. Few recognize the bidirectional relationship between capitalism and greed. देखो, कैपिटलिज्म जहाँ होगा, जहाँ पर मार्केट फ्री रहेगा, जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाने का कोशिश करेगा, वहाँ पर तो ज़रूर एक ग्रीड फैक्टर आएगा, क्योंकि मैं और कमाऊँगा, मैं और प्रॉफिट्स करूँगा. ये जो टेंडेंसी है ये तो आ ही जाता है. दैट ईच रीइंफोर्सेस द अदर. कैपिटलिज्म और ग्रीड एक दूसरे को मजबूत बनाता है, राइट. रीइंफोर्सेस इज स्ट्रेंथन्स. The other. Surely a more honest conceptualization of the conflicts of interest among the rich and powerful players who have benefited from the system, their biases and ideology is needed. Right? एक अगर मतलब एक सही conceptualization of the conflicts of interest, ये जो interest का conflicts है among the rich and powerful players who have benefited from the system, their biases and ideology is needed. ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो इससे बेनिफिट किए हैं उनका बायस क्या है, उनका आइडियोलॉजी जाने. The focus on the wealth creation should also highlight the resultant gross iniquity. ये एक important line है. The focus on the wealth creation should also highlight the resultant ग्रॉस इनिक्विटी. अभी ये सब देशों में जहाँ पर कैपिटलिज्म, जैसे ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, ये सब जगह में क्या हुआ है, जब कैपिटलिज्म एक फोर्स के साथ अपना काम किया है, तो उसमें जो हुआ है कि द डिफरेंस इन इनकम, डिफरेंस इन सोशल स्टेटस, डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्टेटस आ चुका है और एक इनइक्वल सोसाइटी बना दिया है, जहाँ पर द रिच हैज़ बिकम रिचर and the poor has become poor.
तो एक ग्रॉस इनिक्विटी हुआ है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सब लोगों में नहीं हुआ है, राइट. सो दिस इज व्हाट द पैसेज wants to say. To sum up the passage, it is, the passage talks about the challenges of capitalism where questions on the relation between greed and capitalism come to fore, and resultantly create inequality. Right. So yeah, the apologists of question number 20, the apologists of the free market system, according to the passage, believe in market without control by government authorities, market without protection by the government, ability of the market to self-correct, market for free goods and services. So free market system का जो apologist हैं वो कौन सा वाला चीज़ को सपोर्ट करता है, राइट. मार्केट विदाउट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये चीज़ पैसेज में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है. मार्केट विदाउट प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट, ये प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट को भी मेंशन नहीं किया गया है, बट यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, राइट, वो है द एबिलिटी ऑफ द मार्केट टू सेल्फ करेक्ट. यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि recent crisis and the exercise that few surely more honest and the biases. तो ये जो सेल्फ करेक्शन है, लिबरलाइजेशन, फ्री मार्केट, यहाँ पर लिखा गया है एंड देयर एबिलिटी, देयर एफिशिएंसी एंड देयर एबिलिटी फॉर सेल्फ करेक्शन. तो ये जो पार्ट है, ये सेल्फ करेक्शन, दिस विल बी द आंसर फॉर 20. So ability of market to self correct itself. Next question है, with reference to ideological bias, with reference to ideological bias, the passage implies that, ये जो ideological bias है, right, यहाँ पर उस reference में passage क्या imply कर रहे हैं? Effect the global banking. The debate tends to focus on monetary efficiency issue. The policy system constitutes. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? देखिए, there are biases and ideologies in it. The first should also highlight the gross result of that. Free market is fair but not competent. Okay, free market is fair but not competent. Passage ideological bias का मतलब ये चीज़ नहीं है. फ्री मार्केट इज फेयर बट नॉट कॉम्पिटेंट, वो चीज़ यहाँ पर नहीं बताया गया है. बोल रहे हैं कि फ्री मार्केट इन द, दिस इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन बेसिकली. क्योंकि बोल रहे हैं फ्री मार्केट इज वेरी कॉम्पिटेंट,
free market is not fair but competent. आइडियोलॉजिकल बायस के हिसाब से अभी आप ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये सेकंड वाला ऑप्शन इज बेसिकली एन एक्सट्रीम ऑप्शन. नॉट फेयर यहाँ पर कहीं पर पैसेज में हिंट नहीं है. फ्री मार्केट इज फेयर एंड कॉम्पिटेंट. यस, फ्री मार्केट फेयर होता है. implies what? That the free market is fair and competent. So this is the correct answer. ये नहीं होगा, B नहीं होगा. Free market is neither fair nor biased. This is totally an incorrect option according to the passage. This cannot be implied. Ideological bias के हिसाब से the passage implies that free market is fair and competent. The exercise of private greed. Question number 22 बोल रहे हैं, the exercise of private greed will be in the larger public interest. From the passage, ये जो statement है, it refers to false ideology of capitalism. Point number 1. Option number 2 underlies the righteous claim of the free market. Righteous means honest or truthful. Claim of the free market shows the benevolent. Benevolent means welfare. Face of capitalism ignores resultant gross inequality. Ignores resultant gross inequality. So 22 जो है इसका आंसर होगा refers to the false ideology of capitalism. Yes, exercise of private greed will be in the larger public interest. ये अगर होता तो gross inequality क्यों दिखता? If it is exercise, प्राइवेट ग्रीड जो है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो फिर ये इनइक्वालिटी कौन है? सो इट रेफर्स टू द फॉल्स आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, राइट, जो कि कैपिटलिज्म एक फेस बना के दिखा रहा है, उसे नहीं. अंडरलाइज द राइटियस क्लेम ऑफ द फ्री मार्केट. नो इट डजंट, बिकॉज इट टॉक्स इन कॉन्ट्रास्ट, सो इट्स अ कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन. Right. Shows the benevolent face of capitalism? Absolutely no. Contrarian opinion. Ignores resultant gross equality. लास्ट में हमने पैसेज में वही चीज़ देखे हैं कि प्राइवेट ग्रीड से क्या होगा? ग्रॉस इनइक्वालिटी. रिजल्टेंट ग्रॉस इनइक्वालिटी को वो देखते हैं, वो कॉम्पीट करते हैं, वो मार्केट शेयर बढ़ाते हैं, अपना स्लाइस ऑफ केक को और भी बड़ा करते हैं, राइट. और वही कैपिटलिज्म का मेन इंटरेस्ट रहता है, राइट. नॉट डिस्ट्रीब्यूट द केक अमंग एवरीवन. ओके, सो आंसर इज नॉट ए. 1 ओनली नहीं होगा, 2 and 3 नहीं होगा, इट्स 1 and 4, राइट. सो आंसर इज सी. डी तो ओनली डी नहीं होगा. ओके. So basically we saw that this passage is about capitalism and its effect on the people and the market in the developing countries, especially developing countries, because Brazil, China and India are categorized as developing countries. So passage 7 was about this. Now let's look at passage 8. क्या बोल रहे हैं? Net profits are only 2 to 2% of the total assets for central public sector undertakings. Central public sector जो undertakings है, जैसे IOCL हुआ, BPCL हुआ, right, SAIL हुआ, ये सब जो हैं, उनका net profit is 2 to 2% of the total assets for central PSUs, public sector undertakings, lower than the private corporate sector, जो कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर से वो कम है.
उनका टोटल एसेट जो है उसके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट्स होता है तो वो 2% होता है। वाइल द पब्लिक सेक्टर ऑफ द स्टेट लेड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रिगरिंग, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडियाज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रिगरिंग मीन्स इनिशिएटिव। Initiating, triggering India's industrialization, our evolving development needs. हमारा जो development evolving is emerging. Right. Development needs. Comparatively less than satisfactory performance of the public sector enterprises, the maturing of our private sector, a much larger social base now available for expanding entrepreneurship, and the growing institutional capabilities to enforce competition policies would suggest that time has come to review the role of public sector. अभी टाइम आ चुका है जहाँ पर हम पब्लिक सेक्टर का रोल को हमें रिव्यू करना है, राइट। बिकॉज क्या बोल रहे हैं, लेस सेटिस्फैक्ट्री था उनका परफॉर्मेंस, राइट। सो प्राइवेट सेक्टर मैच्योर हो चुका है अभी तक आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, a much larger social base now available for expanding entrepreneurship, सोशल बेस भी है जिसमें एक्सपैंड कर सकते हैं हम entrepreneurship, and the growing institutional capabilities to enforce competition policies. अभी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट बन चुका है, राइट। तो टाइम आ गया है कि पब्लिक सेक्टर का ये जो बहुत लेस परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट हो रहा है, इसको असेस करके पब्लिक सेक्टर का रोल कैसा होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, उसका एक्सपेंशन, उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, किस टाइप से वो मार्केट शेयर को रखेंगे अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर, ये सब स्टडी करने का, एनालिसिस करने का एक वक्त आ चुका है। सो द इनिशियल पैराग्राफ जो है about the PSUs, speaks about the PSUs and the present evaluation against private sector. What should the portfolio composition of the government be? गवर्नमेंट का जो composition होगा in terms of public and private sector वो कैसा होना? It should not remain static all time, right? Static is constant. The airline industry works well as a purely private affair. अभी example दे रहे हैं. At the opposite end, rural roads whose sparse traffic makes tolling unviable. Unviable means non-functionable. Right. Have to be on the balance sheet of the state. अभी जबकि एक तरफ में एयरलाइन इंडस्ट्री को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में ही छोड़ना चाहिए, अदर साइड में रूरल रोड्स, राइट, जहाँ पर बहुत कम ट्रैफिक चलता है,
वो पब्लिक सेक्टर में हाथ में रहना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर टोल बूथ लगा के पैसा आप कलेक्शन नहीं कर सकोगे, वो फिजिबल नहीं होगा, राइट. हैव टू बी ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द स्टेट. इफ द गवर्नमेंट डिड नॉट ओन रूरल रोड्स, दे वुड नॉट एग्जिस्ट. क्योंकि ये सब में प्राइवेट सेक्टर अपना पैसा नहीं लगाएंगे, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज लुक्स एट द end theory. Private sector always looks at the end theory. So naturally, वो क्या करेंगे, वो उसमें हाथ नहीं लगाएंगे. Similarly, public health capital in our towns and cities will need to come from public sector. अभी एक comparative study हो रहा है कि कौन कौन सा एरिया में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का एंट्री होना चाहिए, कौन सा. एयरलाइंस हो गया, उसके बाद जो रूरल रोड्स हैं, उसके बाद जो पब्लिक हेल्थ है, राइट, टाउन्स एंड सिटीज़ में, राइट, वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही रहना चाहिए, क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर घुसेंगे नहीं. इक्वली प्रिजर्वेशन एंड improvement of forest cover will have to be the new priority for public sector assets. अभी सेकेंड पैराग्राफ में प्योरली ऑथर क्या कर रहे हैं, द ऑथर इज laying out the roles of public and private sector. It is laying out the roles of public and private sector. कि कुछ का एरिया में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को काम करना चाहिए. टेक द एग्जांपल ऑफ स्टील. विथ नियर जीरो टैरिफ्स, इंडिया इज अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर द मेटल. कोई इसमें टैक्स टैरिफ नहीं लगता है. सो इंडिया एक बहुत ही ग्लोबली कॉम्पिटिटिव मार्केट है स्टील के लिए. इंडियन फर्म्स एक्सपोर्ट स्टील इनटू द ग्लोबल मार्केट, which demonstrates there is no gap in technology. यानी इंडियन फर्म्स क्या करता है, वो ग्लोबल मार्केट में स्टील एक्सपोर्ट करता है. राइट. तो उसका मतलब क्या कि इंडियन जो स्टील मैन्युफैक्चरर हैं उनका टेक्नोलॉजी एकदम टॉप क्लास है. Indian companies are buying up global steel companies, which shows there is no gap in capital availability. यानी पैसों का कोई कमी नहीं है. Under this condition, private ownership works best. इस टाइप का कंपटीशन में प्राइवेट ओनरशिप बहुत बढ़िया काम करता है. सो इस पैराग्राफ में क्या हुआ है, द ऑथर हैज taken up an example of an industry which is successful in the private sector.
Private ownership is clearly desirable in regulated industries, ranging from finance to infrastructure. ये सब में जिसमें कि सरकार रेगुलेट कर सकते हैं, where a government agency performs the function of regulation and multiple competing firms are located in the private sector. क्योंकि अदरवाइज वो क्या होगा, पहले वाला जो पैसेज था उसी के जैसा हो जाएगा, जहाँ पर मार्केट में एक इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगा. हियर द सिंपल एंड क्लीन सोल्यूशन, गवर्नमेंट एज द अंपायर, गवर्नमेंट एक अंपायर का रोल प्ले करेंगे कि कहीं पर घोटाला ना हो, कहीं पर गड़बड़ ना हो, एंड द प्राइवेट सेक्टर एज द प्लेयर्स इन इज व्हाट वर्क्स द बेस्ट. दिस अ वेरी गुड समिंग अप. बोलते हैं कि ये सब इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर को प्ले करना चाहिए, गवर्नमेंट वहाँ पर मॉनिटर करेंगे, रेगुलेट करेंगे. In many of these industries, we have a legacy of government ownership. Legacy means history. Legacy is rich history. Legacy of government ownership, where productivity tends to be lower, fear of bankruptcy is absent, right? Productivity थोड़ा कम होता है, right? Fear of bankruptcy, वो कंपनी डूब जाने का कोई डर नहीं रहता है, and the risk of asking for money from the taxpayer is ever present. There is also the conflict of interest between government as the owner and government as the regulator. यहाँ पर एक conflict of interest है. Government as the owner, जैसे public sector undertakings, and government जो regulate करते हैं, monitor करते हैं, right? The formulation and implementation of competition policy will be more vigorous and fair if government companies are out of action. अगर government companies action से निकल जाता है तो क्या होगा, implementation भी better होगा, competition policy भी और vigorous होगा, right? Vigorous, energetic, right? जब गवर्नमेंट कंपनीज ये सबसे बाहर आ जाएंगे. अकॉर्डिंग टू द पैसेज 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज और आर द रीजंस फॉर सेइंग दैट टाइम हैज कम टू रिव्यू द पब्लिक सेक्टर. क्या क्या रीजन है इस चीज को ऑथर का बताने का. नाउ पब्लिक सेक्टर हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द industrialization process. Now this is once again an extreme statement. So ये हमारा आंसर नहीं होगा. Has lost its reference, ये extreme हो गया. Public sector does not perform satisfactorily. पब्लिक सेक्टर डज नॉट परफॉर्म सैटिस्फैक्टरली. यस, उसका हिंट हमें फर्स्ट लाइन में मिला है, जहाँ पर नेट प्रॉफिट का जो बात हो रहा है वो बहुत ही कम है, और देयर आर मेनी एरियाज जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इज परफॉर्मिंग और आउट परफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर. सो टू कैन इज द रीजन, राइट, वन ऑफ द रीजन. टाइम हैज कम टू रिव्यू. Entrepreneurship in private sector is expanding. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था, वहाँ पर बताया गया था, राइट, कि entrepreneurship in the private sector is expanding and growing institutional capabilities to enforce competition policy, right? So हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें ग्रो कर रहा है entrepreneurship. So naturally हमें इस इंडस्ट्री में और इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपैंडिंग. दिस ऑल्सो कैन बी द रीजन्स वाई वी नीड टू डू अ रिव्यू ऑफ द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. सो 3 ऑल्सो इज द रीजन. Effective competition policies are available now. Yes, competition policy will be more vigorous and fair if government competitions are out of action. So competitive policies अभी अवेलेबल है, राइट, और जो कि ये अवेलेबल हैं तो ये हमारा
काम में आएगा और प्राइवेट सेक्टर मार्केट को एक्सपैंड करेगा. द गवर्नमेंट हैज टू एक्ट or take the role of a referee or an umpire, जिससे कि वो इस चीज को मॉनिटर और रेगुलेट करेगा. अदरवाइज फिर वो डिबेट आ जाएगा जो हम इससे पहले वाला पैसेज में. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ए इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर, सी इज द आंसर. सो 2, 3 and 4. Public sector does not perform satisfactorily. Entrepreneurship in private sector is expanding. Effective competition policies are available. Right? तो ये reasons होगा हमें review policy करने के लिए for the public sector. According to the passage, rural roads should be in domain of public sector only. पूछ रहे why? Rural development work is the domain of the government only. Rural development work is the domain of the government only. Once again, this is an extreme option. Passage is not hinting anywhere that it is only the domain of the public sector. So this will not be the answer. Second point क्या है? Option B. Private sectors cannot have monetary gains in this. So 24 में प्राइवेट सेक्टर्स मैंने जैसे तब बताया कि रूरल रोड्स हुआ, पब्लिक हेल्थ हुआ, ये सब में प्राइवेट सेक्टर का कोई मॉनिटरी गेन नहीं हुआ. और प्राइवेट सेक्टर का मॉनिटरी गेन नहीं होगा तो वो कैसे अपना बिजनेस चलाएंगे या एक्सपैंड करेंगे. सो दिस इज प्रिज्यूमेबली द करेक्ट आंसर. अभी बाकी दो देख लेते हैं. गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम टैक्स पेयर्स एंड हेंस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ओनली. दिस हैज नॉट बीन हिंटेड इन द पैसेज. Not hinted in the passage. Private sectors need not have any social responsibility. Vague generalization. इसको बोलने का कोई मतलब नहीं है. Vague generalization. The portfolio composition of the government refers to, यहाँ पर बोला है portfolio composition of the government. Okay. Public sector assets quality. Public sector's assets quality. This cannot be the portfolio composition, because it is talking about assets ka quality. So this is irrelevant. In context to the question. Investments in liquid assets. No. Once again ये सेम चीज होगा. Mix of government, क्योंकि जितने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया गया है, it is talking about the areas where the public sector needs to work. Propose किया गया है, it is about areas where the government sector needs to work, and mix of government investment in different industrial sectors, जिसको बोलते हैं portfolio composition. Buying return on investment yielding capital assets, nowhere mentioned in the passage. Next question, 26 question बोल रहे हैं. The author prefers government as the umpire and private sector as players because government prescribes norms
for a fair play by the private sector. So गवर्नमेंट को रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉर्म्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करता है फॉर अ फेयर प्ले. गवर्नमेंट इज अल्टीमेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. दिस वंस अगेन इज an extreme option. Government has no control over private sector players. Not hinted in the passage. This also is none of the above statement. This also is not correct. So this is the answer. Prescribes norms for a fair play. So तब जाके ना जब वो prescription करेंगे for the rules and regulations and the ways in which the industry should operate, talks about the government as an umpire and private sector as players. So ये जो passage हैं, ये passage is a discussion about the different categories and sectors in which the public and the private sector should participate and why they should participate in such sections. This is an analytical passage, right? And they have done a comparison that कौन कौन सा एरिया में प्राइवेट सेक्टर, कौन कौन सा एरिया में पब्लिक सेक्टर काम करेंगे, और गवर्नमेंट यहाँ पर जब प्राइवेट सेक्टर को वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने के लिए देंगे तो गवर्नमेंट को तब उस जगह पे एक अंपायर का रोल प्ले करना चाहिए और द प्राइवेट सेक्टर शुड बी प्लेयर्स जहाँ पर कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंशन, अपना प्रॉफिट्स, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ करेंगे, बट गवर्नमेंट विल ओवरसी द होल थिंग एज एन अंपायर. सो ये पैसेज जो हमारा पैसेज नंबर 8 था उसी के बारे में चर्चा हुआ है. टाइम टू गो टू पैसेज नंबर 9. छोटा सा पैसेज है. इन फ्रंट ऑफ अस was walking a bare-headed old man in tattered clothes. Bare-headed is uncovered. Bare is uncovered. In tattered, tattered means torn. He was driving his beasts. वो अपना जानवरों को, beast is animals. They were all laden with heavy loads of clay. Laden here is loaded. From the hills and looked tired. The man carried a long whip, which perhaps he himself had made. लंबा सा जिसे मारते हैं किसी को, whip. A long wooden stick. Wooden or bamboo stick. In fact, long, thin. As he walked down the road, he stopped now and then to eat the wild berries that grew on bushes along the uneven road. रुका खाने के लिए, पेड़ से तोड़ के wild berries. When he threw away the seeds, the bold birds would fly to peck at them. Peck means hit with the peck. Birds का जो मुंह होता है उसको peck बोलते हैं. Sometimes a stray dog watched the procession philosophically and then began to bark. ये जो चल रहा था, जानवर चल रहे थे, उनको हट हट करके वो आगे ले रहे थे,
तो कभी कभार रास्ते में जाते वक्त कुछ रास्तों के कुत्ते जो हैं वो उनको देखते हैं बहुत गौर करके, एंड देन बिगैन टू बर्क, और उसके बाद वो चिल्लाना शुरू कर देते। When this happened, my two little sons would stand still holding my hands firmly. मेरा दो जो बच्चे हैं वो मेरे हाथ को कस के पकड़ के वो देखते रहते। That a dog can sometimes be dangerous indeed. कभी कभार एक कुत्ता बहुत ही डेंजरस हो सकता है। राइट, सो दिस इज अ नैरेटिव पैसेज, एक पैसेज जो कि एक कहानी को नैरेट कर। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है द ऑथर्स चिल्ड्रन हेल्ड हिज हैंड फर्मली बिकॉज द ऑथर्स हेल्ड हिज hand children held his hands firmly because they were scared of the barking dog. They wanted to pluck berries. Not mentioned in the passage. They saw the whip in the old man's hand. Not the reason. The road was uneven. Irrelevant statement. कोई मतलब ही नहीं बैठता यहाँ पर। Irrelevant statement. Right. So answer is option A. Because they are scared of because a dog can sometimes be dangerous indeed. ये जो statement है इसी से will derive the answer A. So the answer is A. तो 2014 का हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसको देखते हैं। सॉरी, वी हैव 28, क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28, the expression a stray dog watched the procession philosophically means the dog was restless and furious. So restless and ferocious होगा तो why will they watch philosophically? Philosophically means to watch with a lot of focus and attention. So this is contrarian view. Because this is not proving the word philosophical. The dog stood aloof. Stand aloof means totally separated. This is a phrasal verb which means to stay totally disconnected. So the dog stood aloof looking at the procession with seriousness. Right. This is also not the correct hint or assumption. Next says the dog looked at the procession with big wondering eyes. This is exactly what they were doing. So this is the correct answer. The dog stood there with his eyes closed. Sentence is also correct and irrelevant statement. Dogs never stand with their eyes closed. Right. So ये जो हैं ये totally एक आपका irrelevant statement है. And the sentence is also incorrect because dog के साथ हम his use नहीं करते. Dog के साथ हम his use नहीं करते. We come to the last passage, passage 10.
Cynthia was a shy girl. ये भी एक narrative passage, right? The previous one was a narrative passage. Narrative passages कम आता है, but कभी कभार definitely it's a part of the CSAT comprehension passage. Cynthia was a shy girl. She believed Cynthia was a shy girl. She believed that she was plain and untalented. One day her teacher ordered the entire class to show up for audition for the school play. Cynthia एक लाजुक टाइप की लड़की थी, शर्मीली थी, राइट, और उनमें कोई टैलेंट नहीं था, एकदम प्लेन थी. उनका टीचर एक दिन उनको बुलाया, स्कूल में एक प्ले होगा, उसके बारे में. Cynthia nearly died of fright when she was told that she would have to stand on stage in front of the entire class and deliver dialogues. उनको dialogue बोलना है, तब तो वो पूरा घबरा गई. The mere thought of it made her feel sick. उनको जैसे बुखार आना शुरू हो गया. A remarkable transformation occurred during the audition. जब audition हुआ, तब उनमें एक अजब सा change आया. Right, a thin shy girl, her knees quaking. Quaking means shaking out of fear. Her stomach churning in terror. Churning means rolling. पेट के अंदर में सारा चीज पूरा एकदम रोल हो रहा था. Began to stun everyone with her excellent performance. Stun is surprise. Her bored classmates suddenly stopped their noisy chat to stare at her slender is slim, figure on the stage. At the end of her audition, the entire room erupted in thunderous applause. Break open in appreciation. So it is talking about, the passage is talking about a girl talking about a shy girl who unknowingly or unconsciously transform to a brilliant performer on stage. Cynthia was afraid to stand on stage because she felt her classmates may laugh at her. Her stomach was churning. But she was afraid. Why was she afraid to stand on stage? But the reason is that she lacked confidence. Rest of the things were symptoms. Rest of the things जो हैं, right? This is irrelevant, incorrect. ये तो पैसेज में कहीं hinted है ही नहीं, right? But बाकी जो दो चीज हैं, right? This is basically symptoms. But the reason was that she lacked confidence. Cynthia's classmates were chatting
because it was their turn to act next. No, incorrect, nowhere there in the passage, not hinted. They were bored by the performance. So very simple. 30 answer is very simple. Bored by the performance of the other people. Cynthia did not act well. Contrarian. Ulta hua hai. Cynthia's knees were quaking because she felt nervous and shy. The teacher scolded her. Not mentioned. She was very thin and weak. Not the reason. She was afraid of her classmates. Nowhere hinted. So the answer is she felt nervous and shy. The transformation that occurred during the audition refers to the nervousness of Cynthia, the eruption of the entire room in thunderous applause, the surprise on the faces of her classmate, and D is the stunning performance of Cynthia. Yes, because the transformation occurred the transformation was visible only because she gave a stunning performance. So rest of them, they don't work out. Right. Transformation has occurred. This is a preceding situation. Eruption of the entire room in thunderous applause. This is the post-performance situation. The surprise on the faces of the classmates is once again post-performance. D is the correct answer. So passages 9 and 10 are narrative passages. 9 talked about an old man with his beasts, and probably उसमें आपका गधों के बारे में या खच्चर के बारे में बात किया गया है. In some maybe a hilly areas where there are many shepherds जो कि अपने animals को लेके चलते हैं, कभी घास खिलाने के लिए, कभी वापस उनको वहाँ से लाते हैं and all these. And there was a small boy who was watching this whole activity. तो ये था एक narrative passage. And next one is a description of a girl who basically was a very shy girl, और वो स्टेज पर चढ़ते उनको इनिशियली कुछ नर्वसनेस हुआ है जिसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन हुआ था, और उसके बाद वो एंटायरली ट्रांसफॉर्म हो गए, और ट्रांसफॉर्म होने के बाद शी गेव अ वेरी वेरी स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस, जिससे कि क्लासमेट्स उनके जो थे जो बोर हो रहे थे वो फिर से एकदम चंगा हो गए. एंड एवरीवन, उनका परफॉर्मेंस जब ख़त्म हुआ है उसके बाद एवरीवन उनको बहुत ही तारीफ़ की, तालियों के गड़गड़ाहट से और बाकी चीज़ों से. सो शी वॉज अपलॉडेड. दिस इज़ वॉट ends CSAT comprehension paper of 2014. Definitely we will now shift to the comprehension paper of 2015.
Human history abounds in claims and theories. Abounds is filled with. Confining the right of governing to a few select citizens. Right of governing to a few select citizens. यानी सरकार या देश चलाने का जो राइट है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में देने का हिस्ट्री हम भर्ती देखते हैं. Exclusion of the many is justified on the ground that human beings may be rightfully segregated for the good of the society and viability of the political process. Usability or effectivity of the political process. So human history abounds in claims and theories confining the rights of governing to a few select citizens. Why? Many को क्यों काटा गया है? आमतौर पर कुछ मतलब आम लोगों को क्यों काटा गया है? Because ह्यूमन बींग्स को राइटफुली हम सेग्रीगेट कर सकते हैं फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए कुछ लोगों के हाथ में देना ही वो सही होता है, एंड वायबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस. जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसका जो वायबिलिटी है उसको चलाने के लिए हजारों लोगों के हाथ में दे देने से वो गदर हो जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट एसेंशियल as a part of the argument in the above passage. So, जब least essential बोले हैं तो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे मोस्ट एसेंशियल कौन सा है वो सब हम जोड़ेंगे, राइट, और जो पढ़ा रहेगा वो लीस्ट एसेंशियल हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड यू नो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. First one says that man seeks control over external things affecting them. In society there are super and subhuman beings. Exceptions to universal citizen participation are conducive to systemic efficacy. Exceptions to universal citizens' participation are conducive. This is absolutely correct. So this is there hinted in the passage. And strong hint है, तो हम इसको जरूर कह सकते हैं कि one of the most essential part. Governing implies recognition of disparities in individual capacities. Disparities means separation. Disparate means separate. Difference. Right. Governing implies recognition of disparities in individual capacities. Right. In society there are super and subhuman beings. Yes, partially ये भी एक essential part of the argument है. But man seeks control over external things affecting him. This is the least essential.
ये एक बहुत ही एक्सट्रीम ऑप्शन हो जाता है. सो आप इसको आंसर करोगे ए को, एंड rest of them are not the answers because rest of them are partially or fully hinted in the passage. Partially or fully hinted in the passage because यहाँ पर passage बोल रहा है कि we need to create a section or a class of people who would be a select few who would be governing the country, because if governing is left to everyone and anyone, then it will become a sort of an anarchy. वो anarchy type का हो जाएगा. So passage 1 is talking about governance through select few. Many people in India feel if we cut our defense expenditure on weapon building, we can create a climate of peace with our neighbors, subsequently reducing the conflict or creating a no-war situation. This part is talking about demilitarization, or rather de-weaponization. एक तो वेपनाइजेशन होता है जहाँ पर यू इंक्रीज योर डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन वेपन बिल्डिंग, राइट, एंड दिस इज de-weaponization through which you can create a climate of peace with your neighbors and reduce the conflict. So reducing the conflict. Okay, so climate of peace, reducing the conflict and creating a no-war situation. People who proclaim such ideas, proclaim is claim on. Such ideas are either the victims of war, वो लोग या तो युद्ध में victimized हुए हैं, of the propagators of false argument, and either the victims of war of the propagators of false argument, right? वो लोग बोलते हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए, false argument, which refers to the above passage, which of the following is the most, with reference to the above passage, which of the following is the most valid assumption? सबसे valid assumption कौन सा है, right? Building of weapon systems by us has instigated our neighbors to wage war against us. Nowhere hinted in the passage. ये तो कहीं पर भी hinted नहीं है. The greater spending on weapon building by us would lessen the possibility of armed conflict with our neighbors, right? यहाँ पर देखिए जो वर्ड हैं false argument, यही प्रूव करता है कि हमारा जो बी पॉइंट है, दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड मेनी अदर कंट्रीज आर डूइंग. दे आर एस्केलेटिंग, दे आर बिल्डिंग अप ऑन देयर वेपन बिल्डिंग कैपेसिटीज, और उनको लगता है कि दिस विल कीप द नेबर्स फ्रॉम अटैकिंग एंड क्रिएटिंग ट्रबल in a sovereign nation. It is necessary to have
state-of-the-art weapon systems for national security. Now ये state-of-the-art modernized weapon system ये not within the scope of the passage. Many people in India believe that we are wasting our resources on weapon building. Relevant. कहीं पर कुछ इसके बारे में mention हुआ ही नहीं. Right, so it's irrelevant. It doesn't make any sense. Good morning, sir. Yes, sir. So this passage was basically about the weapon building, and some people believe that de-escalating weapons or de-weaponization will lead to peace, which is a false argument because it is being proven by the victims of the war. Right? So the answer to question number 3 is B. India accounts for nearly a fifth of the world's child deaths. Nearly a fifth of the world's child deaths. The 1/5 of the world's child deaths which happen, वो इंडिया में होता है. In terms of numbers, it is the highest in the world. Numbers में it is the highest. 16 lakhs every year. 16 लाख बच्चे इंडिया में मरते हैं. Of these, more than half die in the first month of life. First month of life में ही 16 लाख से 8 लाख मर जाते हैं. Officials believe that the reason for this is the absence of steps to propagate माने spread, basic health practices relating to breastfeeding and immunization. जो basic health practices हैं, breastfeeding है और immunization है, इसको related है. Also, the large reproductive population of 2 to 6 crore remains bereft, deprived, cut off from of care during the critical phases of pregnancy and post-delivery, जिनको हम प्रीनेटाल और एंटीनेटाल पीरियड बोलते हैं. Added to this is the prevalence of child marriages, बच्चों का शादी करवाना, anemia among young women, and lack of focus on adolescent sanitation, use of sanitary pads, etc. puberty के समय में, all of which impact child death rates. So this is basically about the passage is basically about the reasons for high child or infant mortality in India. Which is the critical inference that can be made from the passage?
A lot of Indians are illiterate and hence they do not recognize the value of basic health practices. This is option A. B says India has a very huge population and the government alone cannot manage public health services. Option C says universalization and integration of maternal health and child health services can effectively address the problem. The nutrition of women in childbearing age does not affect child mortality rate. So this one is totally contrary to the information in the passage. A lot of Indians are illiterate. Passage does not talk about सर अब समझ में आ रहा है जी 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 हमारे पास जो मार्केटिंग टीम से जो women's health बुलाकर जो यहाँ पर देते हैं and literacy. मार्केटिंग टीम से जो हमारे यहाँ लीड्स लाकर देते हैं उस लीड्स को लेकर यहाँ पर जो है बकायदा लोग फॉलो अप करते हैं और हमारे India has a very huge population. जो हमारा जो बगल में सेंटर है वहाँ से So, कई इम्पोर्टेंट मार्केटिंग मेंबर्स जो है हम लोग population वहाँ पे रखते हैं और वहाँ से हमें जो है बहुत ही and प्रॉपर health चाहते हैं और अक्सर एडमिशन हमारे यहाँ होते हैं वहाँ link is not discussed here. So the answer is C. Universalization and integration of maternal health and child health services can effectively address the problem because this is talking about an inference and a critical inference जो कि आपको ये जो समस्याएं हैं इसको सुधारने में या इसका हल करने में मदद करेगी. So this is the answer. So answer is 4. पैसेज 5 जो है उसको अभी देखेंगे. पैसेज 5 बोल रहे हैं फूड्स ट्रैवल मोर देन द पीपल हु ईट देम. आज की डेट में फूड्स ट्रैवल मोर देन द पीपल हु ईट देम. Grocery stores and supermarkets are loaded with preserved and processed foods. खाना जो अपने रॉ फॉर्म में नहीं होता है वो प्रिजर्व किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है. This, however, often leads to environmental threats, such as pollution generated by long-distance food transportation. जो pollution होता है transportation of long-distance food transportation में, and wastage of food during processing and transportation. Wastage भी होता है. Destruction of rainforests, reduced nutritional content. Rainforest destruction होता है, nutritional content reduce होता है, increased demand for preservation and packaging और preservation packaging का increased demand होता है. Food insecurity also increases as the produce comes from regions that are not feeding their own population properly. So, एक particular food आता है, so वो X region से आता है, Y region को आता है, Y region में उसका consumption बहुत high है, X region में उसका प्रोडक्शन बहुत हाई है. तो वहाँ से
पूरा चीज़ वाई रीजन को आ जाता है और बड़े बड़े कंपनियां ये चीज़ करते हैं, तो फिर एक्स रीजन के लोगों के लिए एक फूड इनसिक्योरिटी हो जाता है, राइट। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ फूड, मोबिलाइजेशन ऑफ फूड के बारे में बता रहे हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ फूड, and adverse consequences. क्या क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, रिड्यूस न्यूट्रिशनल कंटेंट्स, इंक्रीज डिमांड ऑफ फॉर प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विथ रेफरेंस टू द above passage, which of the following statement is true? Consuming regionally grown food and not depending on long travel food is a part of eco-friendly behavior. This can be a very Thank you, sir. Happy Puja, sir. vague assumption. ये इस पैसेज से हम इसको वो नहीं कर सकते। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री puts a burden on our natural resources, right? So यहाँ पर consumer regional growth food and not depend, so ये जो हैं इसको हम बोल सकते हैं कि though it is a vague assumption, right, it can be at a point in time assumed, it can be because तब food को अपना travel करना नहीं पड़ेगा. So the answer in this case would be both 1 and 2. सेकेंड वाला तो बिल्कुल सही है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पुट्स अ बर्डन ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज, वो तो बताया गया है, राइट, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो पॉइंट्स है वो बताया गया है. सो ए इज नॉट द आंसर, बी इज नॉट द आंसर, सी इज द आंसर, एंड एक्चुअली डी doesn't make any sense. So this was the next passage, passage number 5, which is talking about mobilization of food and adverse consequences. Let's look at passage 6. This is the first person narrative. I must say that beyond occasionally exposing me to laughter, my constitutional shyness has been of no disadvantage whatever. मेरा जो अंदरूनी जो शर्मीली जो एटीट्यूड है, ये मेरे लिए कभी डिसएडवांटेज नहीं बना. In fact, I can see that on the contrary, on the opposite, it has been all to my advantage. ये मेरे लिए advantage ही था. My hesitancy in speech, which was once an annoyance, is now a pleasure. बोलते हैं कि पहले जब मैं बात ठीक से नहीं कर पाता था, स्पीच नहीं दे पा रहा था, वो मेरे लिए एक इरिटेटिंग फैक्टर था, बट आज उसको मैं एंजॉय करता हूँ, वो एक प्लेजर बन चुका है. Its greatest benefit has been that it has taught me the economy of words. कम शब्द में बातों को व्यक्त करना. I have naturally formed the habit of restraining my thoughts. Restraining is controlling.
and I can now give myself the certificate that a thoughtless word hardly ever escapes my tongue of pen. I do not recollect ever having had to regret anything in my speech or writing. मेरे को कभी अफसोस नहीं होता है कि मैंने कोई वर्ड या समथिंग मेरे स्पीच या राइटिंग में मैंने नहीं पा पाया. I have thus been spared many a mishap and waste of time. Mishap is accident. Experience has taught me that silence is part of the spiritual discipline of a votary of truth. Very important statement. Votary is someone who votes or someone who supports something. Experience has taught me that silence is part of the spiritual discipline of a votary of truth. जो सच का सपोर्ट करते हैं, राइट. मेरा एक्सपीरियंस मेरे को बताता है कि वो साइलेंस, चुपचाप रहना एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होता है. प्रोननेस टू एग्जेजरेट, प्रोननेस इज टेंडेंसी और इंक्लिनेशन. टेंडेंसी और inclination. Exaggerate means to blow up. कोई चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाना या बढ़ा चढ़ा के बोलना. To suppress or modify the truth, wittingly or unwittingly, knowingly or unknowingly, is a natural weakness of man. ट्रुथ को दबाना या उसको मॉडिफाई करना, राइट, जान के न जान के, is a natural weakness of man, and silence is necessary in order to surmount it. Surmount is overcome. A man of few words will rarely be thoughtless in his speech. जो कम बात करते हैं वो कभी भी बिना सोचे हुए बात नहीं करेंगे. He will measure every word. We find so many people impatient to talk. लोग बात करने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं. There is no chairman of a meeting who is not pestered with notes for permission to speak. Pestered is disturbed. And whenever the permission is given, the speaker generally exceeds the time limit. जब भी बोलने दो तो स्पीकर क्या करता है, टाइम लिमिट एक्सीड करता है, asks for more time and keeps on talking without permission. All this talking can hardly be said to be of any benefit to the world. ये सब जो बातचीत ज़्यादा करते हैं लोग, ये दुनिया में कोई काम में नहीं आता है. It is so much waste of time. So this man is giving an idea on the basically power of silence or few words. He's saying that a person of few words is a person of worth.
My shyness has been in reality my shield and buckler. Means shield, protection. Shield and buckler means protection. It has allowed me to grow. It has helped me in my discernment of truth. Discernment means being wise in judgment. So this essay is basically a reflective essay. Where the person is talking about, the author is talking about, the power of silence or few words, and how if it happens the other way round, तो क्या होता है ना? People who exaggerate, people who talk beyond their time, people who don't respect the limitations or the brevity of a speech, right? तो उनमें क्या होता है ना, उसमें बहुत सारा वेस्ट ऑफ टाइम होता है. lots of things are spoken which are not necessary, but author क्या है, उनका जो shyness है, वो जो कम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं he is a reticent or a taciturn, वो उनके लिए एक ढाल बन चुके हैं, right? वो उनके लिए प्रोटेक्शन बन चुके हैं. और वो क्या अलाउ किए हैं उनको अलाउ किए हैं ग्रो करने के लिए, because he listens a lot and he speaks very less. It has helped me in discernment of truth, कि सच्चाई सही में क्या है, कौन सा सच है, कौन सा गलत है, उस चीज़ को जानने में उनको बहुत अच्छा हेल्प किया है. दिस बेसिकली a reflection in his life which he has penned down or put down as a passage, जो कि हमारे इस एग्जाम में आए हैं. The author says that a thoughtless world hardly ever escapes his tongue or pen. Which one of the following is not a valid reason? ये चीज आप गौर करिए, is not a valid reason for this. Right. So ये बोल रहे हैं not a valid reason. He has no intention. So says a thoughtless word hardly ever escapes his tongue or pen. So he has no intention to waste time. He believes in the economy of words. Right? Not true. बोल रहे हैं not true. So author says a thoughtless word hardly ever escapes his tongue or pen. Which one of the following is not a valid reason? Right. So B says he believes in the economy of words. This is true. He believes, sorry. So this will not be the answer. He believes in restraining his thoughts. This also is true. So this will not be the answer. He has hesitance in his speech. Yes, this one is also true. So he has no intention to waste his time is not a valid reason for thoughtless words. So answer is A. 6 का आंसर आपका A होगा. The most appropriate reason for the author to be spared many a mishap is that he hardly utters or writes a thoughtless word. He is a man of immense patience. He believes that he is a spiritual person and he is a votary of truth. Right? So, यहाँ पर most appropriate reason मांगा है. किस बारे में मांगा है spared mishap. Spared mishap उनका हुआ है because he hardly utters or writes a thoughtless word. He is a man of immense patience. उसके साथ उनका spare होना not relevant to the question.
He believes that he is a spiritual person, not hinted in a passage. He talks about spiritual connection with silence, but not वो एक spiritual आदमी है, वो चीज़ वो नहीं बोले. He is a votary of truth, not mentioned in the passage. For the author, silence is necessary in order to surmount. Number 8 is definitely not constitutional shyness. Constitutional shyness is a character. It's a character. It's a character. Not to surmount that. Hesitancy in speech. Silence and hesitancy in speech, they are antithetical. So this is not the answer. B is not the answer. Suppression of thoughts. Silence and suppression of thoughts are not interconnected. It is tendency to overstate. ज़्यादा ना बोल दें, इसीलिए फिर not interconnected. Tendency to overstate, not interconnected. The richer states have a responsibility. So this passage is basically the power of silence and the effectivity of speaking less but more effectively. The richer states have a responsibility to cut down carbon emissions and promote clean energy investments. Very true, and in today's context, even more true. States here means nations. To cut down carbon emissions and promote clean energy investments. These are the states that got electricity, grew faster, and now have high per capita income, making them capable of sharing India's burden of becoming eco-friendly. ये सब बहुत फास्ट ग्रो किए हैं, राइट? इनका पर कैपिटा इनकम हाई है, and making them capable of India's burden of becoming eco-friendly, right? So India का जो burden है आज के डेट में pollution वगैरह वगैरह का, right, वो बटोरने में मदद कर रहे हैं, right, और becoming eco-friendly. Delhi, for example, can help by generating its own clean electricity using solar rooftop panels, or even help poor states finance their clean energy projects. कुछ स्टेट अमीर हैं, कुछ स्टेट गरीब हैं, राइट? तो यहाँ पर शेयर करना है. सोलर रूफटॉप से दिल्ली ने ये चीज़ की है. It is no secret that the state electricity boards, which control 95% of the distribution network, are neck deep in losses. They are very much in losses. So there are many places, जैसे उड़ीसा में अभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टाटा को दिया गया है, बिकॉज ये लोग चला नहीं पा रहे हैं. दीज लॉसेस फर्दर डिस्करेज स्टेट यूटिलिटीज फ्रॉम अडॉप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी एज इट इज मोर एक्सपेंसिव देन फॉसिल फ्यूल. तो इससे ये जो लॉसेस हो रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब स्टेट्स और भी डिमोटिवेटेड हो जा रहा है, क्योंकि वो अगर रिन्यूएबल एनर्जी में घुसेंगे तो उसमें तो खर्चा और भी ज़्यादा है और लोग पैसा नहीं देते हैं. आज इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन में इतना बड़ा लॉस है बिकॉज इंसान इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और उसको पैसा नहीं देते हैं, सिंस और वो की जो कि इलेक्ट्रिसिटी इज एन एसेंशियल आइटम, उतना आप मतलब रैंडमली रेकलेसली आप उसको डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं लोगों का. फिर वो आंदोलन शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए ये एक बड़ा सा चैलेंज बन चुका है. Which among
the following is the most logical and rational assumption? सबसे logical rational assumption कौन सा है? That can be made from the passage. The richer states must lead in the production and adoption of renewable energy. The poor states always have to depend on rich states for electricity. State electricity boards can improve their finances by undertaking clean energy projects. The high economic disparity between the rich and poor states is the major cause of high carbon emissions in India. Right? So question number 9 जो है इनका आंसर तो पूरा पूरी क्लियर है. Right? लास्ट से पकड़ते हैं. No connect between economic disparity and carbon emission. पैसेज में वैसा कुछ कनेक्शन हमने एस्टैब्लिश हुआ है, वो नहीं देखें. And improve the finances undertaking, not within the scope of the passage. ये चीज पैसेज में कहीं पर है नहीं. Poor states always have to depend. Strongly worded, incorrect option. ऐसा कुछ जिक्र यहाँ पर है नहीं. This one is the correct answer. A is the correct answer. The richer states must lead in production and adoption of renewable energy. First पैराग्राफ का शुरुआत में ही ये चीज बताया गया है कि द रिचेस्ट स्टेट्स मस्ट लीड इन प्रोडक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. सो दिस पैसेज, इसको अगर समराइज करें ताकि समझने में हमें और भी आसान हो आगे जाके इस टाइप का पैसेज जब हम करेंगे. दिस पैसेज इफ आई समराइज इज richer states in India must share the burden of clean energy and help poorer states cut down on losses for distribution. लास्ट पैसेज आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पैसेज नंबर 8. Set against the rural backdrop, stench of kerosene is the story of a couple. This is once again a narrative passage.
Set against a rural backdrop, Stench of Kerosene is the story of a couple, Guleri and Manak, who have been happily married for several years but do not have a child. Manak's mother is desperate to have a grandchild to carry on the family name. Hence, she gets Manak remarried in Guleri's absence. Manak, who acts as a reluctant but passive spectator, is meanwhile informed by a friend that Guleri, on hearing about her husband's second marriage, poured kerosene on her clothes and set fire to them. Manak is heartbroken and begins to live as if he were a dead man. When his second wife delivers a son, Manak stares at the child for a long time and blurts out, "Taking away, he stinks of kerosene." It's a very tragic story of a man who couldn't produce a child with his first wife, and his family forced him to remarry, and उनका जब एक बच्चा हुआ, he was living a life of a dead man, walking, and उसमें क्या हुआ कि सेकंड बच्चा जब पैदा हुआ तो मनक उसको जब देखा, और बहुत समय देखने के बाद, जो कि उनका अभी भी फीलिंग्स एंड लव वाज टुवर्ड्स हिज फर्स्ट वाइफ, राइट, तो उसने बोला कि उसको ले जाओ, वो बच्चा का शरीर से केरोसिन का बदबू आता है, क्योंकि ये मनक का माइंड वाज सिवियरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हॉरिबल डेथ जो कि उनकी वाइफ अपनाई थी by pouring kerosene and setting fire on her. This is a sensitive issue-based story which tries to sensitize the readers about. ये एक बहुत ही sensitive story है और एक social, इसमें very strong social message है, जो लिखते हैं male chauvinism. Chauvinism is exaggerated pride. And infidelity, absolutely not. इसमें infidelity is being betraying towards a marriage or partner. Love and betrayal. It's not about love and betrayal. Lack of legal safeguards for women. 10 is not about lack of legal safeguards for women. This is also not hinted in the passage, both of them. This is about influence of patriarchal mindset, जिसमें कि अगर फैमिली में बेटा नहीं आता है, राइट, पेट्रियार्कल इस पुरुषतांत्रिक, तो वो फैमिली नहीं चल सकता है, वगैरह वगैरह, राइट, बच्चा नहीं पैदा होता है, तो इट्स अबाउट टिपिकली अ पेट्रियार्कल माइंडसेट. So passage 8 is a very sad passage, where it is talking about a childless couple and the tragic end of the wife when she hears about remarriage.